Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of JAM differential equations. That is, we will discuss about non-homogeneous linear differential equation with constant coefficients. That is, we will discuss about its particular solution now. And let's get started. 1 over d minus a by q क्या होगा हमारे पास e raised to power ax इंटीग्रेशन q e raised to power minus ax dx. ये कैसे आया हमारे पास? If we assume it to be y, then it would be q is equal to d minus ay, which is equal to dy over dx minus a, which is a linear differential equation, and we know how to solve it. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारे पास इसका? यहाँ से आएगा e raised to power minus a x 1 dx, which is equal to e raised to power minus ax. ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ हमारे पास. So solution will be y into integrating factor equal to integration q into integrating factor dx plus a constant, and hence we get y is equal to e raised to power ax q e minus ax dx. पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए वी ओमिट दिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. Some of the formulas which you should remember: 1 minus x का inverse is equal to 1 plus x square and so on up to infinity. 1 minus x का minus 2, 1 plus 2x plus 3x square up to infinity. 1 minus x raised to power minus 3 is equal to 1 plus 3x plus 6x square, so on up to infinity. 1 plus x का inverse is equal to 1 minus x plus x square and so on, alternating terms. 1 plus x raised to power 2 is equal to 1 minus 2x plus 3x square, alternating terms up to infinity. Why I have told you these formula? Because this would be useful in our what we are going to do next. Non-homogeneous linear differential equations. अब y double dash plus y is equal to ex. इसमें से y sin x तो हो नहीं सकता क्योंकि वो ex की फॉर्म में नहीं होगा. सिमिलरली e raised to power 2x या उसका कोई ऐसे cx की फॉर्म में नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ex आना चाहिए हमारे पास. और अगर ex होगा तो it would be ex plus ex, which is 2ex. Therefore it would be ex by 2. तो ये हमारे पास एक इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा. सो बेसिकली हमने क्या किया, ये जो यहाँ पे फंक्शन पड़ा है उससे थोड़ा सा स्पेकुलेट किया कि हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आएगा. सो ऐसे ही हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं. सी ई ए एक्स फॉर्म के सेम टाइप की सोल्यूशंस होंगे. कोई चेंज नहीं आ गया उन सॉल्यूशंस में, जैसे ये दिखता है वैसे ही सॉल्यूशन आएगा. एंड साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स डेरिवेटिव रिपीट हो सकता है इसमें. मीन्स या तो इसकी फॉर्म का होगा या इसकी डेरिवेटिव की फॉर्म का सॉल्यूशन होगा हमारे पास. एक्स रेज़ टू पावर n उस टाइप के बेसिकली फंक्शंस जिसमें डेरिवेटिव एक स्टेज के बाद इवेंचुअली वैनिश कर जाता है, आइडेंटिकली जीरो बन जाता है. सो पॉलिनॉमियल टाइप के फंक्शंस, इनके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेथड होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का. अब कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनके लिए हमारे पास कोई भी जिनमें कोई खास बात नहीं है और हमें उनका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना नहीं आता है. सच दैट इज tan x, secant x, log x, 1 by x, x raised to power 1 by n, and so on. पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे अब हम.
for a particular type of Q. फर्स्ट अगर Q हमारे पास e⁻ax की फॉर्म का होगा तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा 1/f of d Q would be where Q is of e⁻ax form 1/f of a into e⁻ax where f of a is not equal to 0. In case if f of a is equal to 0, then we arrive at our case of failure. Then in that case, what we do? Y is equal to x into 1/f of dash d e⁻ax and substitute here d as a. अगर फिर से case of failure होगा, then again we will differentiate. Basically, what it would look like if we have y is equal to 1/d minus a raised to power n e raised to power ax, then up to n times it will be 0, our denominator. So y would be x raised to power n factorial e raised to power ax. Now, second case, if our q is of the form sin ax or cos ax, then particular integral 1/f of d square. d square को रिप्लेस करना है, mind it, sin ax or cos x is equal to 1 minus f of minus of a square sin ax, which should be not equal to 0. In case f of minus a square is equal to 0, then in that case y would be x 1/f dash of d square sin ax and repeat the process. d square को minus a square से replace कर देना है. जिसके example 1/d square plus a square sin ax would be x dot f dash d square क्या आएगा यहाँ पे 2d sin ax 1/d इंटीग्रेशन होती है sin ax की इंटीग्रेशन x by 2 minus cos ax by a. सिमिलरली अगर यहाँ पे cos होगा तो हमारे पास क्या आएगा x 1/2d cos ax which would be x sin ax over 2a. Now a third form, if q is of the form x raised to power m, then we will find the lowest degree term and put it in the outside. Basically what we do is f of d को हम इस फॉर्म का कर देंगे 1 प्लस माइनस फाइव ऑफ d की फॉर्म का कर देंगे. ऑलराइट, सो बेसिकली y क्या होगा 1/f of d into x raised to power m 1 plus minus फाइव of d का इनवर्स x raised to power m. एंड मैंने इनवर्स के फॉर्मूलेज अभी ऊपर बताए थे काफी सारे, सो वो यूज होंगे यहाँ पे. Fourth, which we have is if q is of the form e raised to power ax and x is any function of x, then in that case y equal to 1/f of d e raised to power ax, x is equal to exponential shift use करेंगे f d plus alpha x. Now fifth and the most important which we have is if q is of the form x and capital X, where capital X is any function of x. In that case, x into 1/fd, x plus 1/f of d का derivative into x, which is equal to minus of 1/f
f dash t the square.